आप सभी का स्वागत करते हुए मैं पुनः एक बार कोल घोटाले के संदर्भ में कुछ सूचना और जानकारी देना चाहता हूं। मैं जो पिछले एक वर्ष पूर्व और उसके पहले पूर्व भी हमने इस विषय को आपके सामने रखा था, तब हमने ये कहा था कि कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में यूपीए सरकार, कोयला मंत्रालय और साथ में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत धांधलियां कर चुके हैं और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सौभाग्य से सीएजी की रिपोर्ट के बाद में जनता ने और आप लोगों ने हमारे इस आरोप पर विश्वास किया और इसमें आप लोगों का भी भारी सहयोग रहा है। अभी तक मैं प्रेस, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको सही माना है। आगे जिस तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटन में धांधलियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, घोटाला हुआ है, बोगस कंपनियों को ब्लॉक दिए गए हैं, कुछ ब्लॉक कंपनियों ने प्राप्त होने के बाद में बेचे हैं, कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कंपनियों ने ब्लॉक लेने के बाद में उसका अधिकांश कंपनियों ने उस पर कोई विकास काम नहीं किया है। और ये सारी बातों की शिकायतें हम सीवीसी के पास में भी कर चुके थे और सीवीसी ने सीबीआई को जांच करने दे चुके हैं। उसकी सीबीआई अपनी पद्धति से कार्य कर रही है, उसके बारे में हम कुछ आज कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन जितना घोटाला आवंटन प्रक्रिया में हुआ है, उतना ही घोटाला कैंसल करने की प्रक्रिया में भी सरकार कर रही है। और विशेषकर आवंटन प्रक्रिया में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित थे, लेकिन कैंसलेशन की प्रक्रिया में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जो जानबूझकर कैंसल प्रक्रिया को विलंब करने का और साथ में ही इन बोगस कंपनियां जिन्होंने कोल ब्लॉक लेने के बाद में उसका खनन नहीं किया, उत्पादन नहीं किया और जिन शर्तों पर कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था, उन शर्तों में उस समय ये शर्तें हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन की तारीख से 3 वर्ष 6 माह में और 4 वर्ष 6 माह में कोयले का उत्पादन होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट लैंड है तो 6 माह एडिशनल दिया हुआ है, 3 साल के बजाय 3.5 साल किया गया है, 4 साल के बजाय 4.5 साल किया गया है। लेकिन मैं आपके सामने ये कहूंगा, मेरे सामने जो मुझे प्राप्त है ऑथराइज लिस्ट, जिसमें 2006 से लेके 2008 तक, जब तक लोकसभा में बिल पेश हुआ है, अमेंडमेंट बिल जो आया था एमएमआरडीए कोल में, तब तक जितनी भी कंपनियों को दिए गए थे, उनमें से एक भी कंपनी ने कोयले का खनन नहीं किया। और 2006 से लेके 2012 तक ये सारी कंपनियों को कैंसिल करने की अधिकार कोल मंत्रालय को है। स्क्रीनिंग कमेटी ने जो ब्लॉक दिए थे, उस वक्त शर्त ये बनी थी कि 3 वर्ष 6 महीने में ब्लॉक ओपन करना चाहिए, अन्यथा जो ब्लॉक देते समय बैंक गारंटी का उसमें ली गई थी, 1 वर्ष की रॉयल्टी के अनुरूप बैंक गारंटी भी ली गई थी। बैंक गारंटी का 50% हिस्सा कटेगा और ब्लॉक कैंसिल होने की प्रक्रिया होगी। इनमें से 115 कंपनियां जिन्होंने 2008 अर्थात बिल पेश होने तक जिन्होंने ब्लॉक लिए थे, उन्होंने कोयले का खनन नहीं किया। ये सारी कंपनियों के ब्लॉक कैंसिल करने के अधिकार कोल मंत्रालय को है, मैं दावा करता हूं और लिखित भी है। ये सारे ब्लॉक कैंसिल कर सकते हैं 115 कंपनियों के। उसके बाद 2 ब्लॉक जिसमें कोल टू लिक्विड के लिए दिए गए थे,
ये दोनों भी ब्लॉक देते समय सरकार ने बहुत बड़ी गलती की, धांधलियां की, बेईमानी की। इन ब्लॉकों को देते समय स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। स्क्रीनिंग कमेटी में जो 6 सचिव होते हैं, उसमें विविध स्टेट के मुख्य सचिव और साथ में कोल इंडिया के चेयरमैन, ये सारे लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी नहीं ली। इसलिए नहीं ली कि बिल लोकसभा में पेश हुआ था। तो इस बिल लोकसभा में पेश होने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी हिम्मत नहीं करने की वजह से एक स्पेशल आईएमजी बनाई गई, जो 2 ब्लॉक सीटीएल के लिए दिए गए हैं। इसमें से एक ब्लॉक जेएसपीएल को दिया गया है और दूसरा एसएटीएसएल को दिया गया है। ये दोनों ब्लॉक में 1500 मिलियन मेट्रिक टन कोयला है। ये दोनों ब्लॉक देने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई, आईएमजी, और अपवादात्मक लिखा हुआ है, हमें लिखित दिया गया है कि अपवाद के स्तर पर इन 2 कंपनियों को कोल टू लिक्विड के लिए ब्लॉक दिए गए हैं। ये 2 ब्लॉक भी गलत तरीके से दिए गए हैं और ये दोनों ब्लॉकों को भी कैंसिल करने के लिए सरकार के पास में आधार है। शिकायत हमने की है, शिकायत हमने कई बार की थी इसके बारे में। ये 2 ब्लॉक भी कैंसिल हो सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा डिपॉजिट है। 1500 मिलियन का अर्थ ये होता है कि ये अगर घोटाला माना गया, एक ब्लॉक यानी एक 2G है, दोनों ब्लॉक में 2 2G कितना घोटाला हुआ है। तीसरी जो सूची बनाई है हमने, उसमें लोकसभा में संसद में बिल पेश हुआ था 17/10/2008 को, और जब लोकसभा में बिल पेश हुआ संसद में, तो उसके बाद में ब्लॉक दिए गए। ये अगर देखा गया तो नियमों को तोड़कर ये ब्लॉक का आवंटन किया गया था, और इन आवंटन में करीब 18 ब्लॉक 35 कंपनियों को दिए गए, जिसमें से ये सारी कंपनियां को दिए हुए ब्लॉक गलत है, अवैध है। इन ब्लॉकों को भी सहजता से कैंसिल कर सकती है। हमने शिकायत की है बार बार, और आज भी हम बता रहे हैं कि ये सभी ब्लॉक कैंसिल करने के अधिकार कोल मंत्रालय के पास में है। इन 35 कंपनियों में 3 कंपनियां तो ऐसी है कि जिन 3 कंपनियों को सरकार ने बिल पारित होने के बाद 21 अगस्त 2010 को बिल पारित हुआ था, लेकिन सरकार ने इन 3 कंपनियों को ब्लॉक जो आवंटित किए उसकी तारीखें 14/10/2011 और 1/11/2011, 3 कंपनियों को 2 ब्लॉक दिए गए हैं। कुल मिलाकर में आपके सामने ये जो सूची हमने, आपको भी मिल जाएगी हमारे कार्यालय से, लेकिन ये सूची जो बनाई हमने, ये इसके लिए आधार है। इसमें कोई बिना आधार के हमने ये सूची नहीं बनाई है। ये सारे ब्लॉक कैंसिल करने के अधिकार होते हुए भी अभी सरकार आईएमजी बनाकर हम सब लोगों के आंखों में धूल फेंक रही है। आईएमजी ने कभी 2 ब्लॉक कैंसिल किए, कभी 1 ब्लॉक कैंसिल किया, कभी 3 ब्लॉक कैंसिल किए। इसमें तो बड़ी हंसी की और दुख की बात है कि जो पहला ब्लॉक कैंसिल हुआ था, उस ब्लॉक में 2.2 मिलियन का रिजर्व था, जो कंपनी स्वयं होकर उसको सरेंडर करना चाहती थी। ये भी आंखों में धूल फेंकने का प्रयास है। 1500 मिलियन टन के ब्लॉक हम देते हैं और 2.2 मिलियन का ब्लॉक कैंसिल करते हैं। ऐसे छोटे ब्लॉक कैंसिल करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया, कोल मंत्रालय द्वारा। मैं आपके सामने ये दावे के साथ कहता हूं कि फिलहाल सरकार, प्रधानमंत्री और श्री प्रकाश जायसवाल ये इन ब्लॉक जिनके नाम से हुए, ऐसे ब्लॉक आवंटनधारी सारी कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं, देश के साथ में धोखा दे रहे हैं। कभी भी हमने नहीं सुना होगा आज तक कि श्री प्रकाश जायसवाल जी ने यह कहा है कि हम ब्लॉक कैंसिल करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम ब्लॉक कैंसिल करने जा रहे हैं, उस दिन ये सारी निजी कंपनियां उनके घर पहुंच जाएंगी। हमसे जो आपने उगाई की थी वो हमें लौटा दो। इसीलिए वो कभी नहीं कहेंगे कि हम ब्लॉक कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। ये हमारा कहना आपके माध्यम से ये बात हो सकती है। देश की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा है। ये सारी प्रॉपर्टी हम देश के नाम होने तक हमारी पार्टी इसका संघर्ष कर रही है। मैं आपके बीच में ये सारी सूची इसलिए दे रहा हूं, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है आईएमजी बनाकर। मैं ये भी दावा करता हूं कि आईएमजी पे प्रेशर है। आईएमजी में कुछ अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है।
आईएमजी भी अगर खुले दिल से काम करे तो पूरे के पूरे 151 कंपनियों के जो ब्लॉक 2006 के बाद दिए गए हैं वो सारे कैंसिल हो सकते हैं। बीच में श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था कि 1993 से लेकर सारे ब्लॉकों का इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी ने उसके लिए भी स्वीकार किया है। हम भी चाहते हैं कि जो बोगस कंपनियां हैं जिन्होंने काम नहीं किया है, जिन्होंने फ्री में ब्लॉक आवंटित हुए जिन कंपनियों को, वो सारे कैंसिल अगर होते हैं तो भी हमारा उसमें विरोध नहीं होगा। आपके बीच में इतना ही जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। As you all know, thank you, Ahirji. As you all know, Shri Hansraj Ahir has been doggedly pursuing matters related to the coal allocation, coal block allocation scandal. He's coming up with more and more documentary evidence to show that the government can certainly cancel all the 142 allocations made, even with the existing provisions in law, and that they are not doing it, and they are doing it in a selective basis. The issues that I wanted to raise today, the first one pertains to Sri Veerabhadra Singh. Today, as you are all aware, through a media house, information is coming about Sri Veerabhadra Singh during his tenure as Chief Minister of Himachal Pradesh in the years between 2003 and 2006. His relatives have allegedly been buying land which falls foul of the Tenancy and Land Reforms Bill of Act of Himachal Pradesh, where even if you are a Himachali native, if you are a non-agriculturist, to buy land and to give it away to builders is not permitted. And there are very many more details of that law against which the relatives of Sri Veerabhadra Singh have been working during his time as Chief Minister during 2003 and 2006. Through the expose which has come from the media, it's also very clear that there were income tax evasions too. So both under the Income Tax Act and also the Land and Tenancy and Land Reforms Act of Himachal Pradesh, Sri Veerabhadra Singh has a lot of things to answer. We already know there is a prosecution going on about setting up cement and distillery factories in Himachal Pradesh, probably in Solan. There is a prosecution going on in the court that relates to his chief ministership during the period commencing 1989. Now this which has come up today, it relates to his tenure as chief minister during 2003 and 2006. Of course, he was the chief minister 5 times over, if I remember correct, of Himachal Pradesh. We already know during his tenure as the Union Iron and Steel Minister that Ispat scandal has come out, where we have not heard any explanations coming from Sri Veerabhadra Singh. It's almost like a serial offender. The BJP demands that on this latest, called Kausali Ghotala, the latest land-related, his relatives buying land and selling it off to builders, particularly land which is probably even agriculture and from forest areas. That's the latest expose which the media houses come up with. So you have one which is going on in the court pertaining to 1989 when he was the chief minister. There's another which has come out, the Ispat scandal, which you know relates to his term as Union Iron and Steel Minister. And now the latest expose which comes through a media house relates to his earlier term of 2003-2006. So we demand from the BJP that on the latest expose which has come out of the media about his relatives buying land belonging to agriculture and forest department areas,
lands which have been acquired, even if by Himachalis or together with builders from outside Himachal Pradesh, being converted to become multi-storied apartments or any other complex, which is essentially a non-agricultural use. There is this new scandal. On that, the BJP demands a comprehensive inquiry and would highlight to the public that here is somebody who is one after the other getting in a situation where he is expected to answer on corruption-related charges. Whilst Srimati Sonia Gandhi is giving speeches in Burari, in Mangalore, in Rajkot, or even in Haryana, that her party is committed to fighting corruption. You have somebody who has gone into a state where there is elections happening, being accused one after the other of corruption-related matters. Can Srimati Sonia Gandhi tell us what role she envisages for Sri Veerbhadra Singh in Himachal Pradesh during the campaign and after the campaign? And therefore, if the commitment of the Congress party is to fight corruption, this is no exemplary way of doing it. The BJP demands that the latest expose which has come out of the media be inquired into in a very comprehensive way. The other issue relates to JPC. As you all know, the BJP has been demanding the Prime Minister and the then Finance Minister, who happens to be the Finance Minister now, to appear before the JPC. Otherwise, the truth related to this massive scandal, which has resulted in huge loss to the exchequer, will never see the truth. The truth won't come out. And today, to prove the BJP's insistence on having the Finance Minister and the Prime Minister has been proved right. Yesterday, the former Cabinet Secretary, Shri K.M. Chandrasekhar, has appeared before the JPC. And 2 points are very important about his appearance. The first is that he has appeared before the JPC to say that he had indeed written a letter in December 2007 suggesting that the entry fee could have gone up to 36,000 crores for a pan-India license. What was actually the price at which Sri Raja and the Finance Minister and Dr. Manmohan Singh gave away the 2G, which got cancelled by the Supreme Court later on? What was the price? It was 1,651 crore rupees, which was the price decided in 2001. All the while, the BJP has been demanding what justification was there to use the 2001 price in 2008. And today, with this revelation coming from no less a person than the Cabinet Secretary himself of then time, our stand that there was a lot of change which has happened between end 2007 and early 2008 when it was given away stands absolutely vindicated. The Finance Secretary also, if you remember, the Finance Secretary's note which was written in 2007, November, December, to the then Finance Minister, suggested auction should be a route. And in 2008, and then importantly, the Finance Minister then, Shri P. Chidambaram, had concurred with that view. But come early 2008, after the allocations were made, much before the letter of understanding was intent LOIs were given to the company, Shri Chidambaram changed his position, saying let bygones be bygones, from future we'll take care of auction, but let the 2G allocations continue. Which means between December 2007, even as said by the Cabinet Secretary, lot of changes have happened in the government's thinking about 2G spectrum allocation. Mr. Chandrasekhar also seems to have said that if it is legally possible, please go for auction. He seems to have said that. And the third and the most important point about his presentation, one,
that he had suggested a higher entry fee, much higher entry fee. Second, that he had also suggested where it was legally possible it should go for auction. And the third and most important point, he didn't write it suo motu. He didn't write it on his own. He wrote it in response to the Prime Minister inquiring on the financial implications of what happens if the prices are fixed in a particular way. So the Prime Minister has actually approached him with an intention of knowing what price should prevail, which method should be adopted so that Government of India's treasury gets its best. And in spite of that, I am unfortunately going to have to say this, the Prime Minister agreed to giving it on a first come first served basis at 1,651 and brought a very big disastrous loss to the Government of India. These are issues which are very clearly coming from high officials of the bureaucracy. But then, who's going to answer if what these people are saying is right? Or who's going to say, no, Mr. Chandrasekhar was wrong, our decision was justified? Who's going to give the answer for it? If the Prime Minister and if the Finance Minister do not appear in the JPC, who's going to give the answer? The BJP fought to get the JPC because repeatedly we were told the criminality of whatever has happened will be going through the court processes. But if the policy itself was wrong, or if there's a tweaking in the policy, or if the checks and balances were removed in the decision making, unless the JPC goes through its entire process in a free and fair manner, you're not going to get to know what happened actually in the decision making. And that's why the JPC was important. And today with Mr. Chandrasekhar's revelation, no person lesser than the Prime Minister or Finance Minister can say whether Mr. Chandrasekhar is saying the truth and can say why they went ahead with fixing the price in the 2001 rate. So I appeal to the Prime Minister and the Finance Minister that they present their case before the JPC, which is an appropriate body to look into this. And finally, I did refer to Srimati Sonia Gandhi's speech in Mangalore. A lot has been said about corruption, fighting corruption, getting angry. BJP is promoting corruption and listing as though the Indian citizens do not know where BJP is in the ruling. She has not looked at her neighbor, Andhra Pradesh, where her government is going on. Supreme Court has given notices to her ministers there on corruption-related charges. 6 of them who are in the cabinet have summarized completely lacking substance. And because it is lacking in substance, she was trying to make up with extra aggression. I think this country's citizens, people of this country, are looking forward to a constructive engagement with the government of today on corruption-related matters. So let us take answers from Srimati Sonia Gandhi rather than throwing bitter allegations against people who are questioning them on corruption. Thank you. I guess there are no questions. Thank you very much. And if there was no loss and only illegality, the Supreme Court has cancelled it in any case. Cancellation does not happen without substantive reasons. And whether 2G is giving us a loss because of the earlier allocation was a loss or not, the CAG has explained its position several times. So I suppose we should look at it in a holistic fashion. And the fashion with which we have to emphasize it is 2001 cannot be relevant in terms of price fixation in 2008. And if even the cabinet secretary says there could have been an extent, doesn't he himself therefore
feel that there was a difference between 36,000 and 1,600 and whatever 51? That itself speaks of a loss, even on paper. BJP is not attending the JPC in explaining over. Outside Minister, what statement? Say it is untruth, say it is truth, say, explain it. Who else can do it? We therefore think our demand that the Prime Minister and the Finance Minister should come is perfectly legitimate. But on the question that what if they don't, it just exposes that the Congress party is not keen on coming up clean on this 2G spectrum allocation, and the people of India are watching it. बीजेपी की तरफ से जो एलिगेशंस हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर आया, उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस फ्री व्हीलिंग करते रहे, इतना हाइप बिल्ड करने के बाद हम उनके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ क्लियर जवाब दे चुके हैं. अभी उनके तरफ से अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो जवाब देना ही है उनके पक्ष से. कांग्रेस पार्टी भी वही कह रही है कि उनके अपने तरफ से जांच हो गए. जहां तक मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन संघ के उनके स्टेटमेंट को सुनकर आई थी, वो तो क्लियर बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना है, नहीं होना है, कौन होंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी. यही बात हम पहले से बोलकर आ रहे हैं, उसी में हम रहेंगे, उसी बात में ही रहेंगे. नहीं, ये हम बार बार चिट्ठियां लिखते रहते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है, ये आईएमजी चेयरपर्सन को भी भेजा है और सीवीसी को भी भेजा है हमने चिट्ठी, सरकार को भेजा है और उसके पत्राचार चल रहे हैं. हाँ, उनको पूरे डिटेल जानकारी के साथ भेजा हूं मैंने. जस्ट 1 मिनट, सॉरी, हो रही है, जा रही है. हाँ जी, नहीं, बात ही नहीं, सॉरी. किसी का नाराजगी नहीं है. जो रिपोर्ट प्रेस में आ रही है उसके ऊपर डेफिनेटली पार्टी के कुछ प्रेस रिलीज आएगी. आप ठहरिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो गलत रिपोर्ट है. I understand you're from the media, and I understand lots of perceptions may prevail outside. But as regards irrigation scam, as regards a lot of things which are happening in Maharashtra, just not last year, over the years, the BJP has stood up and raised a lot of issues in the assembly, even on issues related to Sharad Pawar. So if it is convenient for a section of whoever outside to say, oh, probably, you're silent. We have never been silent against any particular leader or any particular issue. Where there are issues to be raised, whether in Maharashtra or in Delhi,
we have been consistently raising issues which affect the common people and which are matters related to corruption. So that is a galat fehmi, if I can say anything. बिल्कुल शामिल होंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं, कल भी परसों भी शाम को जब इसके ऊपर मैं टिप्पणी देते रहे, ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जब चीफ मिनिस्टर्स के कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे इधर सितंबर माह में, और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी हुई सूरजकुंड में, उन दोनों सदस्य में से चीफ मिनिस्टर मोदी जी खुद सबको इनवाइट किए कि आप सब आइए, गुजरात में कैंपेन करिए, हमारी मदद दीजिए। सो इसमें कहां से ऐसे बात आ रही है? लिस्ट तैयार होगी, लिस्ट सबसे तैयार हो रहे हैं, और इसमें सब लोग जाएंगे, सबकी भागीदारी होगी उस इलेक्शन में। इस गलतफहमी को भी दूर करिए। मैं स्पेसिफिकली ऐसे हर एक के नाम के ऊपर जवाब नहीं दे रही हूं। कंप्लीटली सबको इनवाइट जब करना होता है, वो तो कर चुके हैं। सब के मतलब सब। उनके नाम की चर्चा इसलिए है कि सारे सीएम उसमें शामिल हैं, और जहां बीजेपी की सरकार है, अगर सीएम नहीं है, मैं आप अगर इसमें टेक्निकल रूप से पूछेंगे, सारे सीएम्स हैं, आपको मालूम है कि वो डिप्टी सीएम है। हाँ, लिस्ट में आएंगे, छूटने उनको ड्रॉप करने के लिए वो नाम नहीं, डिप्टी सीएम के डेसिग्नेशन को मैं याद नहीं दिला रही हूं, सिर्फ ये बोल रही हूं अगर एक कैटेगरी के अंदर कुछ लोग हैं, दूसरे कैटेगरी के अंदर भी लोग आएंगे, मगर ये नहीं है कि वी ड्रॉप्ड हिम आउट बिकॉज इज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सबको इनवाइट किए हैं, सब लोग आएंगे, सबका नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक लिस्ट में डेफिनेटली आएगा। एक ही लिस्ट नहीं है, शायद 2-3 होगी। I may not be able to give you any answer on that because we have not as a party taken a call on it. When there's a brief on it, I will definitely come back to you. Okay, thank you.